अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो स्पेशल आपके एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल है क्योंकि एमसीक्यूज़ वाला पोर्शन तो आप फिर भी किसी तरह जुगाड़ लगा ही लेते हो, लेकिन जो आपको डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ती है वो है आपके क्वेश्चन वाले पोर्शन में, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से आप उसको प्रॉपर टाइम भी नहीं दे पाते, उसकी प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है पूरी बुक को कंप्लीट वन डे या वन नाइट में रिवाइज़ करना। अगर आप भी टाइम शॉर्टेज को फेस कर रहे हैं और इसकी वजह से परेशान हैं कि कैसे हम एक थोड़े से वक्त में पूरी बुक को रिवाइज करें या पूरी बुक को याद करें, तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। वेट, अगर आप सोच रहे हैं कि ये वीडियो आपको टाइम मैनेजमेंट बताएगी, नो, ये वीडियो आपको आपका बर्डन ओवरकम करना बताएगी कि कैसे आप अपने बर्डन को ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन नहीं, इस वीडियो में तो हम ओवरकम करने के लिए कोई टिप्स भी नहीं दे रहे, बल्कि हम इस वीडियो में आपको आपका फुल पेपर बताने वाले हैं कि जिसको याद करने से आप 100/100 मार्क्स दे सकते हैं। यस, तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने एग्ज़ाम्स में A+ ग्रेड लें या 100% मार्क्स लें, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9th क्लास की केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर 2022। इस चैनल सना इन्फो हब पर बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जिनको याद करने से आप अपना पेपर मिनट्स में सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। जी हाँ, जस्ट एक बार इन क्वेश्चंस को रीड आउट करें, इनको मेमोराइज करें और अपने पेपर के ऊपर फोकस करें। लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम मज़ीद पेपर्स के एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस आपको बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस। व्हाट इज मीन्ड बाय एलिमेंट एंड एक्सप्लेन द एग्जांपल। डिफाइन वैलेंसी, राइट वैलेंसी ऑफ सोडियम। डिफाइन एवोगैड्रोस नंबर। डिफाइन मोल एंड गिव एग्जांपल। कैलकुलेट द ग्राम molecules in 40 ग्राम of phosphoric acid. Define atomic mass unit, difference between compound and element. What is meant by mixture? Give one example. So chapter number 2 के जो short questions हैं उनमें write down the observation of Rutherford atomic model, compare Rutherford's atomic theory and Bohr's atomic theory, write electronic configuration of sulfur, write electronic configuration of chloride ions. What is meant by quantum? Write electronic configuration of carbon. Write down electron configuration of nitrogen. Write down defects of Rutherford model. So next is chapter number 3. What is meant by periods? Write the name of elements of first period. Name the elements of first period of periodic table. What is trend of ionization energy in the period and group? Define electron affinity with an example. Name the elements of first group. Define ionization energy. Next is, what is trend of ionization energy in period? Define electron activity. Write electron activity of nitrogen, oxygen and fluorine. Chapter number 4 के short questions. Define double covalent bond and give example. Difference between donor atom and acceptor atom. Define non-polar covalent bond and give example. Define bonding electron. Define polar covalent bond and give example. Difference between ion pair and bond pair of electrons. Difference between polar covalent bond and non-polar covalent bond. What is meant by metallic bond? So now chapter number 5, very important short questions. अगरचे लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, लेकिन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कीजिएगा। व्हाट इज़ चार्ल्स लॉ? राइट इट्स इक्वेशन। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एवेपोरेशन। व्हाई डज एवेपोरेशन इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर? डिफाइन एवेपोरेशन एंड गिव वन एग्जांपल। सो चैप्टर नंबर 5 के बाद चैप्टर नंबर 6, डिफाइन एक्वस सोल्यूशन, राइट इट्स कंपोनेंट। डिफाइन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सोल्यूशन एंड एक्वस सोल्यूशन? What do you mean by volume and volume percentage? Difference between concentrated solution and dilute solution. Define saturated solution. How much amount of KOH required from 1 molar solution? How molar solutions prepared? Chapter number 7 is next. Define oxidation and reduction reactions. Define redox reaction. Give an example. Define electrochemical cell while the name of its types. Define electrolyte. Give example. Define alloy and give example. Calculate the oxidation number of sulfur in H2SO4. Calculate the oxidation number of chlorine in KClO3. And so on. Chapter number 8. Write any 2 uses of sodium. Which metals are the most malleable and ductile?
Write uses of magnesium. Write down the names of any two moderate reactive metals. Which is most precious metal? Define metallic character. Write down two uses of gold. Write down names of two very reactive metals. Write two uses of silver. Why platinum is used for making jewelry. सो नाउ इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ हम आते हैं. ब्रीफली डिस्क्राइब द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. ब्रीफली डिस्क्राइब द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर. डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग. एक्सप्लेन हाउ दीज प्रॉपर्टीज अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड. डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स. डिस्क्राइब डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सोल्यूशन. Discuss concentration and working of a cell in electricity principle. Now discuss the important features of modern periodic table. Discuss the working of Daniell cell. What is a coordinate covalent bond? Explain it with example. Very important question. What is an isotope? Describe the isotope of hydrogen with diagram. Write a short note on allotropy. Write down the important chemical reactions of halogens. आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम. बी प्रिपेयर्ड एंड बी प्रैक्टिकल. डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन रैंडम एक्टिविटीज़. जस्ट फोकस ऑन योर questions and your book. Prepare your MCQs at the end of the chapters. क्योंकि जो चैप्टर के एंड के आपके जो MCQs हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है और वही आते हैं. सो गुड लक फ्रॉम सना इन्फो हब चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब चैनल.